Yesterday we did what? The food subsidy, the food security of India, and the National Food Security Act, ICDS, National Nutrition Mission, etc. Okay. So today we are going to start with a second important topic with respect to subsidy only, that is fertilizer subsidy. Fertilizer subsidy. Fertilizers. The bill with respect to fertilizer subsidy is only second to food subsidy. Food subsidy provided by government of India is the largest this burden on the government of India exchequer pe. And next to food subsidy is the fertilizer subsidy. The fertilizers became an integral and important part of Indian agriculture from Green Revolution. Okay? We have studied it from Green Revolution. These fertilizers became an integral part of Indian agriculture. And if I can recall, it is 12.4 kg in 1969 per hectare of land to 175 kg in 2018 per hectare of land. The fertilization use, this was 12.4 kg in 1969 per hectare we were using fertilizers. As of 2018, it is 175 kgs per hectare of land. See how vast, how largely we are using what? Fertilizers. तो ये fertilizers कौन कौन से इंडिया में है और गवर्नमेंट कैसे सब्सिडीज पे प्रोवाइड करती है, दैट इज वी आवर टॉपिक एंड वी विल सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. ठीक है. ऑल्सो फर्टिलाइजर्स को किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या कोई और ही तरीका हम यूज करेंगे. उसके बाद we will see the required way forward, what government of India should do in order to decrease its expenditure on this fertilizer. This is a one-way expenditure. This is not creating any capital asset, nothing like that. No economic development. Just it is some sort of subsidy given to the farmers. तो इसमें what is a fertilizer? सबसे पहले then what is a manure? So then organic. What is then fertilizer? These are chemicals. This is a chemical substance synthesized in a lab. ठीक है? Yes. Chemical substance synthesized in a lab in order to increase the fertility of the land. ठीक है? इसमें we have थोड़ा सा basic पहले देख लो. We have primary nutrients, secondary nutrients and micronutrients. इसको अच्छे से समझो, इससे फिर पता चल जाएगा फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में भी क्या होता है. Why is import bill is very high with respect to fertilizers? Why we are trying to be आत्मनिर्भर with respect to the sector of fertilizers? ठीक है. Prime Minister of India has often called that we should be आत्मनिर्भर with respect to fertilizers. वो सब कुछ आपको समझ में आएगा बेसिक से. There are primary nutrients that are necessary for any crop. ठीक है. We classify them as NPK. It is nitrogen, phosphorus and potassium. ठीक है. Nitrogen, phosphorus and potassium. Yeah. We have secondary nutrients as well. These are calcium, magnesium. Yeah. Secondary nutrients. We have micronutrients like boron. We have manganese. We have cobalt. We have copper. These are the micronutrients. इनसे हमें पता चलेगा प्लांट को ये चाहिए ही चाहिए. ठीक है. A plant, a crop which is being grown in any soil needs what? Nitrogen, phosphorus and potassium. That's why they are categorized as primary nutrients. The secondary nutrients ये भी चाहिए, लेकिन इनकी मात्रा कम भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है. And the micronutrients will depend upon the variety of the plant and the type of the soil in which they are sown. कि ये available है
कि नहीं? अगर नहीं है तो बहुत ही माइन्यूट मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में ये चाहिए एक प्लांट को, सो दैट इट कैन ग्रो इफेक्टिवली, ठीक है? Yes, sir. And the ideal NPK ratio of any good soil is 4:2:1. N is to P is to K. Nitrogen should be 4 times, phosphorus should be 2 times, and potassium 1 times. 4:2:1 is the health scale, health curve of any good quality soil. ठीक है? 4:2:1, this is mandated. इस पर पहुंचने के लिए अगर इससे कम है, we will add fertilizer. ठीक है? अगर इससे ज्यादा है, we have to stop the erratic use of fertilizers. अगर इससे ज्यादा हमारी सॉइल में कंटेंट है किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, we have to achieve somehow the balance of 4:2:1 or close to it. समझ आ रही है बात? तो with respect to the nitrogen this fertilizer industry in India, there are 3 important fertilizers which are used in India. How many? 3. Number 1 is urea. Number 2 is DAP. Number 3 is MOP. Urea, ammonium phosphate. This is muriate of potash. इसका एक और नाम है कार्बाइड. You have these 3 what? Fertilizers that are extensively used in India, and इन तीनों में भी सबसे ज्यादा is यूरिया. ठीक है? हमें इसकी केमिकल कंपोजिशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए we will go into specific chemical composition of यूरिया. ठीक है? क्यों हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूरिया, या हमारी यूरिया की जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, मोस्टली वो उन गल्फ स्टेट्स में क्यों है जहाँ पे अबेंडेंस है किसकी? नेचुरल गैस की और ऑयल रिफाइनरीज की. इंडिया इज नॉट ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल गैस एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑयल. ठीक है? दीज कंट्रीज आर प्रेजेंट इन मिडल ईस्ट which are self-sufficient in natural gas as well as oil. तो वहाँ पे हम ज़्यादा import करते हैं वहाँ से, वहाँ पे फैक्ट्रीज वहीं पे है. उस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा we will go into the detail of these things. You right? अभी देखो पहले एक चीज, यूरिया जो है, यूरिया is like this. This is urea. देखा है कभी लाइट? Yes, sir. This is urea, ठीक है? This is the chemical formula of urea. This is CH4N2O, C double bond O with a single bond with nitrogen and hydrogen, ठीक है? This is a crystalline solid. I don't have to go into the details of crystalline solid. That is something else. Crystalline solid. It is soluble in water. The most important thing, it's soluble in water and it's white. It's colorless. ठीक है? दिखने में white है. It's colorless. It's soluble in water. The solubility of this in water is the main cause the urea is effective as a fertilizer. ठीक है? When it's mixed with what? Water and soil के साथ इसको mix किया जाता है, it releases nitrogen. It releases nitrogen while reacting with water, H2O. When it's a chemical reaction happening, it releases nitrogen. And nitrogen, when it's released from urea, is absorbed by plants, and plants के लिए nitrogen is very important. ठीक है? This is the basis कि कैसे यूरिया काम करता है. यूरिया को डालो, पानी डालो, मिलाओ, वहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन को छोड़ देगा, और नाइट्रोजन will be absorbed by plants, and it is a very efficient nutrient, a primary nutrient for plants. समझ आ रही है बात? ऐसा खाद यूज की जाती है अराउंड
फिर उसके बाद पानी, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू यूरिया। इस साइड में बना लो इसकी ये शक्ल कहीं पे, यूरिया को साइड में ऐसे ही इसको। This is diammonium phosphate. Diammonium NH4 whole 2 HPO4. Diammonium phosphate. Diammonium phosphate. देखा? This is diammonium phosphate. ये कुछ नीट की क्लास नहीं लग रही है? सर ये ऐसी माइनस प्लस वगैरह Yes. सर ये और कैसे रहता है? ये तुम्हें याद ही नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बनाओगी तो ठीक, मत बनाओ। मैं कहती हूँ उनको जिनको पढ़ना होता है आराम से याद रहता है, जैसे साइंटिफिक, इसमें बहुत मजा आता है। सर 1846 यूरिया के साथ लिखो 4600 ऐसे 4600। एंड डाइअमोनियम फॉस्फेट के साथ लिखो 18460। एंड यू हैव थर्ड वन, म्यूरेट ऑफ पोटैश, दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, it's also known as potassium chloride, KCl. In this you write like this 0062. सर इसका क्या कहना है दूसरा नाम माय Murate of potash. Murate of potash. You have urea, ठीक है, 4600. You have diammonium phosphate 18460, and you have murate of potash, potassium chloride 0062. And what is this? This is the NPK dash. Urea में you have only nitrogen present 46%. In this diammonium phosphate, nitrogen 18%, phosphorus 46%, and no amount of potassium. Are you getting my point? This is no amount of nitrogen, no amount of phosphorus, but the presence of potash. It will depend on the crop as well as soil, what type of fertilizer you want. समझ आ रही है बात? If you want a fertilizer that should be rich in nitrogen, you will use urea. If you want a fertilizer that is rich in phosphorus, you will use what? Diammonium phosphate.
and if you want a fertilizer that is rich in potassium, you will use muriate of potash. Depending upon the soil as well as the crop, this thing will be used. इधर तक कोई इशू नहीं था इंडिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी में, ये ना सॉरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में. The issue came with the subsidy provided by the government of India. Today, as of now, the government of India is regulating the rates of urea. It means the government of India is fixing the rate of urea. Government of India is fixing the rate of urea. And with respect to diammonium phosphate and muriate of potash, government of India allows market to fix the rate, companies to fix the rate. जो ये बता रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपनीज, उनको बोल रहे हैं you fix the rate. We will provide a flat subsidy of, for example, rupees 10,000 per ton. आपने अगर डीएपी एक टन की कीमत 30,000 रखी, कंपनी में 10,000 इसमें सब्सिडी है, फार्मर को 20,000 पे करने पड़ेंगे. अगर इसकी कीमत 50,000 है, फार्मर को 40,000 पे करना पड़ेगा, 10,000 इसकी सब्सिडी है, इन दोनों की भी. ठीक है, इट इज अ फ्लैट रेट. कुछ भी मार्केट ड्रिवन एमआरपी हो, वी विल प्रोवाइड यू अ फ्लैट रेट ऑफ सब्सिडी. दिस इज बाय गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल डीएपी होता है तैयार 15,000 रुपए में, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10,000, फार्मर को जेब से 5,000 देंगे. 10,000 इज फ्लैट, जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सब्सिडी on DAP as well as muriate of potash, and the rate or MRP of these two is being decided by the manufacturer. But this is not the case with urea. यूरिया में गवर्नमेंट MSP की तरह, जैसे क्रॉप्स पे आप MSP लगाते हो, वैसे ही फिक्स करता है यहीं से आपका प्राइस कि क्या होगा. And the difference between the MRP and the MSP is the subsidy given on this. ठीक है, you have a 45 kg bag of urea, 45 kg of bag urea इंडिया में आपको मिलेगा 266 रुपीज. ठीक है, होना चाहिए इसकी मार्केट रेट है एमआरपी 3,000 के आसपास है, 3,500 के, बट यू आर गेटिंग इट 266 एंड द डिफरेंस इज पेड एज द सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपको जब मार्केट में एज अ फार्मर जाना होगा टू बाय, टू प्रोक्योर व्हाट फर्टिलाइजर, व्हिच फर्टिलाइजर यू आर गोइंग टू प्रेफर? Urea. You are not going to prefer any other fertilizer, even if your soil or crop needs diammonium phosphate or muriate of potash. You are going to buy urea. Why? It's cost effective. ठीक है, इसमें आपको सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है. ये बहुत आपको क्या इजीली, एक तो एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है, इसके बाद इसमें कॉस्ट भी बहुत कम है. एंड दिस यूरिया हैज अ इशू विद इट दैट इज नोन एज नो डिनायल पॉलिसी. नो डिनायल पॉलिसी. कोई भी फार्मर हो या ना हो, यू गो टू द शॉप, मुझे यूरिया चाहिए, आपको 266 में मिलेगा, अगर आप फार्मर भी नहीं हो. इट वाज सपोज्ड टू बी द सब्सिडी टू फार्मर्स, बट हैविंग दिस नो डिनायल पॉलिसी, एनीवन इज गोइंग टू द शॉप, सर यूरिया के 50 बैग, 45 kg का एक बैग, यही 50, 266 के या 270 से मैं पेमेंट कर रहा हूं, इवन इफ आई एम नॉट फार्मर. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे डाइवर्जन होता है. मैं गया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे शायद कैप लगा दी है, 100 बैग आप एक दिन में ले सकते हो, अगले दिन और 100 लूंगा, उसके दिन और 100, इवन इफ आई एम नॉट फार्मर. मैंने ऐसे ही करके 1000 बैग जमा कर लिए, 266 रुपीज पे करके पर बैग. देन आई एम डाइवर्टिंग दिस यूरिया टू बांग्लादेश, टू नेपाल. There is no subsidy. वहां के ब्लैक मार्केट में यही बैग जो मैंने 266 का यहाँ खरीदा, वहां बेच रहा हूँ 1000, 1500. I am earning a huge profit. It was supposed to be for farmers, but it is going somewhere else. समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि there is a no denial policy. Whosoever will go to the shop will take it urea, और उसको सिर्फ ये आना चाहिए, चैनल्स होनी चाहिए उसके पास कि ये एक्सपोर्ट कर पाए कहाँ, नेबरिंग कंट्रीज में, तो वहां तो ये मुनाफा ही मुनाफा कमाएगा. वहां के अपनी डोमेस्टिक मार्केट में यूरिया का बैग 3,000 का होगा, हम 1,500 का दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमें खुद ये 250 रुपए का पड़ा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, कोई 1000 भी देगा तो चलेगा. तो डाइवर्जन ऑफ यूरिया, डाइवर्जन ऑफ फर्टिलाइजर टुक प्लेस.
इसकी वजह से एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। द फर्टिलाइजर सब्सिडी इज वेरी ह्यूज, क्योंकि अगर फार्मर्स को इन रियल सेंस फार्मर्स को चाहिए एक साल में, हमारी एग्जांपल में फार्मर्स को 10,000 बैग्स चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, चाहिए इससे ज्यादा 10,000 हमारी एग्जांपल में फार्मर्स की नीड है एक साल के लिए यूरिया। 1 लाख बैग परचेज होता है, उसमें 90,000 बैग कहां जा रहा है? बाहर। और उस 90,000 पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इट वॉज सपोज टू बी फॉर फार्मर्स। समझ में आ रही है बात? इट वॉज सपोज टू बी फॉर फार्मर्स। तो 10,000 बैग फार्मर्स ने लिए, इनको सब्सिडी मिली, तो इसी के लिए तो ये सब्सिडी थी। लेकिन 90,000 बैग एक्स्ट्रा जो फार्मर्स को नहीं चाहिए था, दैट आर बीइंग प्रोक्योर्ड इन द मार्केट बाय होर्डर्स, by the smugglers, and then it is transferred to neighboring countries. This is a problem. Government has come with certain new techniques with respect to this in order to stop this. For example, they said we will bring a new type of urea that is known as neem coated urea. उन्होंने कहा ये जो यूरिया है it will be coated with neem. इससे क्या होता है? Once the urea is coated with neem, it will be useless for any other purpose other than agriculture. For any other purpose other than industrial use, यूरिया का खत्म हो जाएगा. This urea cannot be used in any industry as a raw material or as a byproduct, as an intermediate product. कुछ नहीं यूज होने वाला. सिर्फ ये यूरिया किस काम में यूज होगा? एग्रीकल्चर में. And it also increases the productivity of urea. While coating the urea with neem, it slows down the release of nitrogen. आराम से नाइट्रोजन सॉइल में रिलीज हो रहा है. तो हमें कम यूरिया चाहिए उसी लैंड को फर्टिलाइजर डालने के मतलब लिए एज कंपेयर टू विदाउट जो नीम था, क्योंकि वो रैपिडली नाइट्रोजन को रिलीज करता था एंड हमें अगले दिन या अगले महीने और यूरिया चाहिए उसके लिए. दिस इज स्लोइंग डाउन द पेस ऑफ रिलीजिंग नाइट्रोजन. एंड एक तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, नाइट्रोजन अवेलेबल रह रहा है, और क्वांटिटी यूरिया की कम भी खर्च हो रही है. हो गए 2. तीसरा, इंडस्ट्रियल पर्पस ऑफ यूरिया जो ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग की वजह से हो रहा था वो भी कम हो रहा है. और भी कुछ चीजें हैं वो आगे देखेंगे. तो यहाँ तक ही समझे इसमें क्या था? अभी तक फर्टिलाइजर में कोई इशू नहीं था. जो ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की एक डिफरेंट तरीके की, देयर इज अ फ्लैट रेट ऑफ सब्सिडी, a market decided rate on diammonium this phosphate as well as muriate of potash, and government is deciding like MSP the rate of what? Urea. And the urea is available in Indian market at a very cheap price. So farmers are procuring what? Urea, and preferring urea even if their soil is demanding diammonium phosphate or muriate of potash. And this has done other environmental hazards as well, degrading or depleting the nutrient levels of the soil. सिर्फ आप नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हो, उनको पोटेशियम भी चाहिए, फॉस्फेट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. ठीक है, you are only using urea. Subsidy bill of government of India is skyrocketing because of this hoarding and all. तो इस पे बहस हो रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हमें एक चीज है, why we are not independent or why we are not Atmanirbhar with respect to urea production. You can't stop this subsidy, otherwise agricultural sector will collapse. इसको step wise हमें reforms लाने हैं इसमें. ठीक है, श्रीलंका ने ऐसा ही कुछ किया था and the consequences are in front of you. You have, देखो इसके साथ आपके टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, just to understand things. There is a process in chemistry known as Haber-Bosch process. ठीक है, this is used for manufacturing of ammonia. ठीक है, in this process, मोटा, nothing, we don't have to do anything chemical. Nitrogen is taken from atmosphere. Atmosphere has 78% nitrogen. Yes, sir. ठीक है, nitrogen is taken from atmosphere. It is mixed with hydrogen. It's mixed with hydrogen, and we are getting
दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिविंग राइज टू अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन is taken from atmosphere. This reaction happens under very high pressure and high temperature, around about 500 degrees Celsius and 150 to 200 atmospheric pressure. अगर कोई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ समझो, नाइट्रोजन टेक्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन जो है यहाँ से आता है, जो इंपॉर्टेंट है इस अमोनिया के बनने, फिर अमोनिया को ही हम दूसरे तरीके से प्रोसेस करके यूरिया बनाते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कहाँ से लाया जाता है, ठीक है। दिस हाइड्रोजन हैज बीन टेकन फ्रॉम टू थिंग्स, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप इसको पानी से लाओगे, ठीक है, या तो आप इसको नेचुरल गैस से लाते हो। दोनों चीजों में अगर पानी से लाओगे या नेचुरल गैस से लाओगे, दोनों चीजें में you need natural gas. Why? Because it requires high temperature. You have to create the temperature. Fossil fuel is required. ठीक है? Fossil fuel is required in order to break hydrogen from water, in order to take out hydrogen from water and supply it to nitrogen, bring a chemical reaction, create ammonia. This natural gas is used in this process extensively. And India being a deficit country with respect to natural gas and fossil fuels like petroleum and all crude oil, cannot afford a process like this. Okay? Hence, India imports a large quantity of urea. Domestic production से जहाँ पे हमें feasible है हम करते हैं. For example, as of this year, हमारे पास 35 million tons urea की requirement होती है per year. 35 million tons, ठीक है। इट इज 3.5 करोड़ टन यूरिया, टन 3.5 करोड़ टन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमारे पास आता है 24 to 25 million tons. We are short of at least 10 to 11 million tons, ठीक है। 10 to 11 million tons, it means 1 से 110 करोड़ टन हमारे पास शॉर्टेज है। तो ये कहाँ से आएगा, ये इंपोर्ट करके आएगा। When you will import, the imports are increasing, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला मसला सब, और उस पे भी the bill is rising. कौन सी बिल? सब्सिडी बिल is rising. हम यूजुअली इसको इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, जहाँ पे there is abundance of natural gas, क्योंकि हम इसी का यूज करके हीट जनरेट करेंगे, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, या नेचुरल गैस से ही हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। या ऑयल रिफाइनरी से व्हेन यू आर टेकिंग आउट अदर दिस KCl या डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, इसके प्रोसेस में यू नीड सल्फर, एंड सल्फर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे होगी, सल्फर इज अ बाई प्रोडक्ट, उसी के नज़दीक ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी, क्योंकि वहाँ से बाई प्रोडक्ट जल्दी आएगा, सल्फर को प्रोसेस किया जाएगा एंड अदर यूरेनियम अदर फर्टिलाइजर्स विल बी क्रिएटेड। बताने का मकसद ये है कि इंपोर्ट एक्सटेंसिवली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर रिच इन व्हाट, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल एंड दिस ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑल। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि इधर से ही क्यों हो रहा है, उधर से क्यों नहीं कर रहे हैं कहीं और कंट्री से, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट रिलायबल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, अमोनिया इन लेबोरेटरी। तो इसके लिए यू नीड दिस थिंग, इसीलिए इंपोर्ट इज एक्सटेंसिवली हैपनिंग फ्रॉम these countries which are rich in oil as well as natural gas. This can be also kept in mind. क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस चीज पे, ठीक है। यहां तक समझ आया? देखो, fertilizer is an artificial chemical. Fertilizer is an artificial chemical. Is an artificial chemical prepared in factories. Fertilizer is an artificial chemical prepared in factories to boost nutrients in the soil.
to boost nutrients in the soil. To boost nutrients in the soil. Full stop. It provides a vital input for the growth of agriculture. It provides a vital input. It provides a vital input for the growth of agriculture. और हमें हिंदुस्तान में क्या चाहिए? फूड सिक्योरिटी एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोडक्शन बहुत कम होगी. ठीक है, for the growth of agriculture, and is an inevitable factor that has inevitable factor that has to be dealt with, for self-sufficiency in production of food grains. For self-sufficiency in production of food grains. For self-sufficiency in production of food grains. Right. The nutrient level present in the soil, the nutrient level present in the soil can be, the nutrient level present in the soil can be broadly classified into three categories. Number one, primary nutrients. You have NPK. Yeah, primary nutrients, you write nitrogen, phosphorus and potassium. NPK. Then you have secondary nutrients. Calcium, magnesium, sulfur. Calcium, magnesium, sulfur. CAMGS. Calcium, magnesium, sulfur. Atomic formula. Symbol. Third, micronutrients. Boron, manganese, boron, B, capital B, boron, manganese, Mn. It's not magnesium, that is different. Magnesium is Mg. It is manganese, Mn, boron, manganese, iron, Fe, copper, chlorine, Cl, molybdenum, Mo. These are some of the micronutrients that are required. किस चीज के लिए? For soil, better growth or better this production of food grains and everything. ठीक है? Right? The ideal ratio with respect to primary nutrients, should be 4:2:1. 4:2:1. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का हमें नहीं ऑटोमेटिकली पता है कि कौन किसका है. Should be 4:2:1. ठीक है. लिखो. As India is a tropical country,
as India is a tropical country. ये soils में आप geography में याद कर लेना. As India is a tropical country, it is generally the soils in India are generally deficient in carbon. Comma, nitrogen, phosphorus and potassium also. Nitrogen, comma, potassium and phosphorus also. Full stop. To offset the deficiencies, इनको साइड में रखने के लिए, to offset the deficiencies, the Indian farming sector relies heavily किस पे? On the use of chemical fertilizers. Because there is an inherent deficiency of nutrients in Indian soils. और ये तो ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ने लगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई. Because we increased new variety of these seeds and other things, जिससे प्रोडक्शन एक साल में 3 बार हुई है. तो सॉइल को वापस न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए you need to add what? Fertilizers. On the use of chemical fertilizers. Full stop. There are 3 basic types of fertilizers used. There are 3 basic types of fertilizers used. Number 1, urea. Or carbamide. This is the chemical name, carbamide. Okay. Chemical names are given by IUPAC. नाम सुना है कभी? Chemical names are given by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो इसका नाम क्या है? कार्बामाइड. वो आपने इसका लिखा ना, केमिकल फार्मूला एंड एवरीथिंग, ठीक है? छोड़ो फिर, लिखो इसमें, लेकिन लिखो NP के रेशियो इसका लिखो उधर ही यूरिया के साथ ही 4600. Next, diammonium phosphate, DAP. Diammonium phosphate, DAP. 1846. 1846. Okay. Third, murate of potash or potassium chloride. Murate of potash or potassium chloride, KCl. Double 062. Yes, sir. Next line. The use of fertilizers in Indian farming sector. The use of fertilizers in Indian farming sector has increased rapidly. As India is the second largest consumer of fertilizers in the world. As India is the second largest consumer of fertilizers in the world. पहला कौन है? China.
as India is the second largest consumer of fertilizers in the world. The demand of fertilizers is growing. The demand of fertilizers is growing. The demand of fertilizers is growing at a compound growth rate. At a compound growth rate. The demand of fertilizers is growing at a compound growth rate of 12% approximately. Of 12% approximately. What is the difference between compound growth rate and a simple growth rate? Compound में is aggregate. हाँ? Aggregate in compound. Compound में हम aggregate. Simple में क्या करते हैं? What is the difference between simple interest and compound interest? तुमने पढ़ा है ना सी सैड? इतना भी नहीं पता. What is the difference between simple interest and compound interest? This is not the subject matter of our class. छोड़ो यहीं पे इसको. The demand of fertilizer is growing at a compound rate of 12% approximately. This can be realized. This can be realized. This can be realized by देखो in 1969 12.4 kg per hectare fertilizers 12.4 kg fertilizers were used per hectare land. 12.4 kg fertilizers were used per hectare of land in 1969. 69. And in 2018 it grew up to 175 kg of fertilizers per hectare of land. 175 kg of fertilizers per hectare of land. ठीक है? Yes. Government of India pays subsidy. Subsidy we have discussed. There's a difference between the cost of production, other incidental cost or issue price. Subsidy to ensure availability of fertilizers. Government of India pays subsidy to ensure availability of fertilizers to farmers at affordable prices. Ensure availability of fertilizers to farmers at affordable prices. At affordable prices. पहले कौन सी रिजीम थी, अब क्या रिजीम है, उसको साइड में रखो. अभी करंट में क्या चल रहा है, we will focus on that. Okay. देखो, two types of subsidies are provided by the government. Two types of subsidies are provided by the government in fertilizer sector. Number one, urea based subsidy.
यूरिया बेस्ड सब्सिडी, जिसमें यूरिया। नंबर 2, नॉन यूरिया सब्सिडी। ठीक है, इसमें यू सी इन दिस यूरिया वाले में लिखो आप, इन द फर्स्ट वन, मतलब यूरिया वाला, इन द फर्स्ट वन सेंटर फिक्सेस the price ब्रैकेट में लिखो MRP at a subsidized cost, full stop. Center pays subsidy to manufacturers. Center pays subsidy to manufacturers based on cost of production and number of units registered. Based on cost of production and number of units required. पहले क्या था इसमें? पहले, अब नहीं होगा। पहले फॉर एग्जाम्पल आई ओन ए कंपनी फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग, हम यूरिया बना रहे हैं, मैंने 1000 बैग्स ऑफ यूरिया क्रिएट किए, बनाए, इसको कहाँ लिया? मार्केट। When it was received in the market and it was registered कि हाँ हमने इन 1000 बैग्स को मार्केट में रिसीव कर लिया, तब जाकर सेंटर यूज टू पे द मैन्युफैक्चरर, जो सब्सिडी है, ठीक है, सेंटर यूज टू पे द मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता था, फिर कोई भी जाता था यूरिया लाने, बिकॉज देयर इज अ नो डिनायल पॉलिसी, वो यूरिया उठा के होल्ड भी करता था, स्मगल भी करता था, एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग 1000 बैग्स, इट इज गोइंग टू द मार्केट, unless and until a retailer is selling this bag of urea to a farmer, तब तक पैसा नहीं जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? फार्मर को आधार कार्ड लेकर एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड की गई है रिटेलर के पास, वो आधार कार्ड क्रेडेंशियल्स डालेगा फार्मर के पूरे, और उसके बाद एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट का, तो उस पोर्टल पे रजिस्टर करेगा कि इस फार्मर ने इतने बैग्स लिए, और वो बैग जो ही लेगा वो ट्रांजैक्शन दिखाएगा पॉइंट ऑफ सेल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतने बैग्स की सब्सिडी इसको देगी। अभी जितने अभी मार्केट में है वो ऐसे ही है, जितना बिकेगा उतनी सब्सिडी इसके अकाउंट में जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर फार्मर के बगैर किसी ने बैग लिया, उसकी सब्सिडी रजिस्टर नहीं होगी। गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे द सब्सिडी ऑन उस इंसान पे जो फार्मर नहीं है, ठीक है। इफ आई एम नॉट अ फार्मर देन उस हिसाब से द सब्सिडी विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द मैन्युफैक्चरर, वो उसी रेट पे देगा, ये रिटेलर उसको फिर उसी रेट पे देगा जिसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है विदाउट सब्सिडी। अगर फार्मर है वो रजिस्टर होगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे, गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन जाएगी, इसने इतने बैग लिए, उतनी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ? मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन दिस सिस्टम। नेक्स्ट टू राइट नॉन यूरिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी।
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। इसमें देखो प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द कंपनी, prices are fixed by the company, prices are fixed by the company, and center pays a flat rate of subsidy. Flat rate of subsidy. And center pays a flat rate of subsidy. And center pays a flat rate of subsidy. This is the name of the portal जो रिटेलर के पास होगा, ई उर्वरक बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, दिस पोर्टल, इस पे रजिस्ट्रेशन होगी कि किस फार्मर ने लिया, उसका आधार कार्ड एंड एवरीथिंग। द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑन दैट ट्रांजैक्शन विल प्रोवाइड सब्सिडी टू द इंडस्ट्री। ठीक है, इसका साइड में नाम लिख के रखो ना पोर्टल का, ई उर्वरक। Give the heading neem coated urea policy 2015. Neem coated urea policy 2015. नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी 2015। अब तो नैनो यूरिया भी आया है मार्केट में लिक्विड फॉर्म में। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? हाँ? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड नहीं, किस मिनिस्ट्री में आता है? There is a ministry known as Ministry of Chemical and Fertilizers. उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स has made it mandatory for all the domestic producers. Has made it mandatory for all the domestic producers. जो भी इंडिया में यूरिया बनाते हैं, has made it mandatory for all the domestic producers to produce 100% urea, to produce 100% urea as neem coated urea, to produce 100% urea as neem coated urea. हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कौन सी इंडस्ट्री है? इफको, दिस इज अ कोऑपरेटिव of fertilizers. छोड़े इस बात को, चलो आगे लिख। Department of Fertilizers has made it mandatory for all the domestic producers to produce 100% urea as neem coated urea. Full stop. Neem coated urea is not fit for industrial use. Neem coated urea is not fit for industrial use. ये इंडस्ट्री में यूज ही नहीं हो सकता। इससे बहुत हद तक इसका वो स्मगलिंग जो है वो रुक जाएगा। Is not fit for industrial use, so chances of its illegal diversion to the industries will be lesser. Chances of its illegal diversion to the industries will be lesser. पहला तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। इसी के साथ देखो, इट इज रिक्वायर्ड लेस इन क्वांटिटी, क्योंकि ये स्लोली कर रहा है नाइट्रोजन रिलीज। इट इज रिक्वायर्ड लेस इन क्वांटिटी विद सेम प्लॉट साइज। इट इज रिक्वायर्ड लेस इन क्वांटिटी विद सेम प्लॉट साइज।
and gives a high yield of crop. Full stop. Due to the slow release of nitrogen, comma, nitrogen use efficiency NUE. There is an indicator NUE कि nitrogen कितना use हो रहा है. NUE, nitrogen use efficiency NUE of neem coated urea increases. इससे ज्यादा यूज होता है नाइट्रोजन. एब्रप्टली इससे नाइट्रोजन रिलीज नहीं होता है, जो पानी से या किसी और चीज से कहीं और बह जाए, रिलीज आराम से हो रहा है. सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ नीम कोटेड यूरिया इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड कंजप्शन. तो फिर ये कम ही तो खर्च होगा. ये क्या लिखा, इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड consumption of neem coated urea as compared to normal urea. ठीक है. देखो, issues with fertilizer subsidies. What are the issues with fertilizer subsidies? And then we will move on to the way forward and the fertilizer will be over. There are three main issues with fertilizer subsidies. बहुत सारे issues हैं, लेकिन तीन सबसे बड़े issues हैं that you should keep in mind. Number one issue is no denial policy. This is an issue. With respect to fertilizer subsidies, there is a no denial policy in place in the country. कोई भी जाएगा fertilizer खरीद के आएगा. ठीक है, ये एक issue है. Second issue is use of chemical fertilizers has led to environmental degradation. बहुत ही खतरनाक तरीके से. When we will study environment, we will see क्या क्या इसके issues हैं. There is something known as blue baby syndrome. बहुत सारे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे पता चलेंगी. यहाँ पे आप ब्रॉड सेंस में याद रखो, दिस इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. दिस इज द सेकंड मोस्ट ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड द थर्ड इज, फर्स्ट इज व्हाट, दिस नो डिनाइल पॉलिसी. सेकंड इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एंड द थर्ड इज इट इज अ बर्डन, फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट. बहुत ही ज्यादा taxpayers' money is being used in this thing, and there is no return of like investment या कोई capital asset, कुछ भी नहीं. It is going against the set standards of subsidies provided as per WTO. There is a dispute in WTO as well. There are subsidies के types हैं, amber box subsidy, green box subsidy. उसमें allow क्या करता है WTO? क्योंकि अगर आपने सब्सिडी दे दी तो इंटरनेशनल मार्केट पे असर पड़ेगा. तो WTO इज द वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो होने नहीं देता. तो इस सब्सिडी की वजह से हमें वहां पे केस लड़ने पड़ते हैं, और बहुत बार इंडिया हार भी चुका है केस. ठीक है, नॉट इन द फेवर ऑफ इंडिया. तो दीज आर द फ्यू मेजर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर सब्सिडी. राइट, इश्यूज विद फर्टिलाइजर सब्सिडी. नंबर वन, एंड नो डिनायल पॉलिसी. And no denial policy. ठीक है. सर, हमने यहाँ पे लिखा ना अभी इसमें कि जो फार्मर नहीं होंगे और जब वो पोर्टल पे नहीं होंगे ये रजिस्टर, तो अरे खाली वो यूरिया के लिए है, बाकी बहुत 22-23 मेजर फर्टिलाइजर्स है. तो ये नो डिनाइल, ये यूरिया के लिए हम करते हैं. ठीक है, और ये पूरी तरीके से अभी ये आया भी नहीं है, मतलब एफिशिएंटली हर कोई ई उर्वरक को यूज नहीं कर रहा है. इट नीड्स टू बी बेटर व्हाट इम्प्लीमेंटेशन. बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, खाली ये नहीं है जिसपे एक फ्लैट रेट ऑफ सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से. मार्केट ड्रिवन जो होते हैं, नॉन यूरिया बेस्ड.
और अभी भी एक ये भी तो हो सकता है इससे कि दैट इफ यू आर नॉट अ फार्मर स्टिल यू आर परचेजिंग, यू आर इंक्रीजिंग द डिमांड इन द मार्केट, अननेसेसरी डिमांड, उससे प्राइसेस इसके इंक्रीज हो रहे हैं, और जो ही प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो बर्डन फार्मर पे नहीं जाएगा, उसको वही 260 रुपए देने हैं, जो बर्डन इंक्रीज हो रहा है वो गवर्नमेंट इज पेइंग टू द इंडस्ट्री। तो ये इशू है, a no denial policy. Anyone can buy any amount of fertilizer. Anyone can buy any amount of fertilizer from the POS machines. There is a 100 bag restriction per transaction. There is a 100 bag restriction per transaction. एक बार में खाली आप 100 बैग खरीद सकते हैं. There is a 100 bag restriction per transaction. However, मगर कितनी transactions ऐसी करोगे उस पर कोई लिमिट नहीं है. However, there is no limit on the number of transactions. Next, degradation of the environment. Degradation of the environment. Subsidies have allowed for excessive fertilizer use. Subsidies have allowed for excessive fertilizer use on agricultural lands. On agricultural land. First stop. Due to poor nitrogen utilization efficiency of Indian soils. Due to poor nitrogen utilization efficiency of Indian soils. The majority of urea is lost as ammonia and nitrogen oxide. The majority of urea is lost as ammonia and nitrogen oxide. Full stop. This causes contamination of groundwater, soil and land, among other things. Contamination of groundwater, soil and land, among other things. Third, economic cost. Economic cost. लास्ट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने कहा था दैट राउंड अबाउट 79,000 कुछ 800, हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 80,000 करोड़ बजट में कहा था कि हमें चाहिए किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 80,000 करोड़ रुपीस. व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड बजट they said that we need 80,000 crore rupees for fertilizer subsidy. At the end of the financial year, it was estimated the money spent on fertilizers was 1.6 lakh crore, double than the estimated also. ठीक है, तो ये है बर्डन फर्टिलाइजर का. इस साल के फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी कुछ महीने बाकी है, गवर्नमेंट हैज सेड दैट वी नीड 2.35 लाख करोड़ फॉर फर्टिलाइजर्स. अभी ये कहां पहुंचेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा फिर पता चलेगा. This is the burden, right? Every
every year the central government spends rupees 1 lakh crore approximately, rupees 1 lakh crore approximately on chemical fertilizer subsidies. यही पैसा एग्रीकल्चर में ही यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते, इरिगेशन में करते, वेयर हाउसिंग में करते, स्टोरेज में करते, ठीक है, तो वो कुछ अलग मसला होता. फुल स्टॉप. Overuse of fertilizers, due to these subsidies has resulted into a huge fiscal burden, on the exchequer. एक तो हो गया ये, ठीक है. अब आपने इकोनॉमिक कॉस्ट में ही देखो, एनवायरमेंटल कॉस्ट में भी आपने कहा कि ये डिग्रेड करता है ग्राउंड वाटर या सब कुछ जो भी. इकोनॉमिक कॉस्ट में व्हेन इट डिग्रेड्स ग्राउंड वाटर, देयर इज अ सिंड्रोम, एक का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, दैट इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. ठीक है. When excessive use of fertilizer is there, groundwater is contaminated, and there is a syndrome known as blue baby syndrome. It is adversely impacting the health sector. और इसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग मनी, जो अदरवाइज करना ही नहीं था अगर फर्टिलाइजर इतना एक्सेसिव यूज नहीं होता. तो यहाँ से भी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. There is a disease caused by the use of excessive fertilizers. Government of India is mitigating, helping to overcome that disease, spending money which otherwise government of India was not supposed to spend. This is another phase of economic cost with respect to what? Fertilizers. You right? क्या लिखा आपने? Also, overuse of fertilizers pollute groundwater. Which has negative health consequences. Full stop. The blue baby syndrome can develop in infants okay, and government of India has to spend money. Government of India has to spend money in order to control diseases that emanate from excessive use of fertilizers. Which government of India otherwise was not supposed to incur. Way forward.
can be the possible way forward for these things? Number one, use of liquid nano urea. Use of liquid nano urea. इफको ने बनाया था एक लिक्विड नैनो यूरिया, 500 ml की बॉटल हमें उतना ही देती है जितना बहुत सारे बैग यूरिया के हमें न्यूट्रिएंट कंजम्पशन देते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज दैट। वो बहुत ही लो क्वांटिटी में यूज होता है उस लैंड में जिसपे हमें 10, 15, 20, 30 बैग लगेंगे यूरिया के, ठीक है। सेकेंड, ब्रिंग यूरिया अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, NBS। ब्रिंग यूरिया अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। जैसे फ्लैट रेट की सब्सिडी दी है आपने उन पे, यूरिया पे भी देगा। ठीक है। थर्ड, जुडिशियस यूज ऑफ ई उर्वरक DBT पोर्टल। ई उर्वरक DBT पोर्टल। नेक्स्ट, ई उर्वरक DBT पोर्टल। नेक्स्ट, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स शुड बी इंक्रीज्ड, जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनेगा। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। Emphasis on crop diversification should be laid. Emphasis on crop diversification should be laid. क्यों? क्योंकि क्रॉप जो आप डाइवर्सली प्लांट करोगे वो खुद अपने न्यूट्रिएंट सॉइल में डालेगा डिफरेंट टाइप। एक ही चीज उगा रहे हो हमेशा के लिए तो इट रिड्यूसेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। Use of technology in agricultural sector, like ENAM, soil health card, etc. ENAM, NAM, soil health card, etc. These are the possible way forwards which can be done in order to reduce the subsidy burden of government of India and the use of excessive fertilizers in Indian agricultural sector.